हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल तोमर स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में हम एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम जो है दो पार्ट, प्रॉब्लम में जो पाथ है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक पाथ स्मूथ पार्ट और एक इसमें जो है रफ पार्ट। एक ब्लॉक है जो ग्राउंड से 4 मीटर हाइट से रिलीज किया जाता है इस कर्व पाथ के अकॉर्डिंग। और ये पाथ यहाँ से स्टार्ट होकर पॉइंट बी तक क्या है, स्मूथ पार्ट। फिर ये बी से सी तक ये रफ पार्ट है जिसपे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.1 दी गई है। ये ब्लॉक जो है सामने वाली वॉल से कोलाइड करता है और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन के बाद ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हमें ये कैलकुलेट करना है कि रेस्ट में आने से पहले ब्लॉक जो है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस ए बी सी पर कितने डिस्टेंस कवर। ओके, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने कोलिजन के बाद ये ब्लॉक जो है रेस्ट में आएगा। राइट, अगर आप कंसिडर करें तो पहले ब्लॉक ए से बी तक आएगा। ब्लॉक जब यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और ये पॉइंट ए पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पॉइंट ए से बी तक इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। फिर जब ये बी से सी की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन इस वेलोसिटी के अगेंस्ट वर्क करेगा जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पे जो इस पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी है उससे कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा और सेम स्पीड से रिबाउंड होगा। फिर ब्लॉक इस तरीके से मूव करेगा एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि कितने कोलिजन के बाद ये ब्लॉक रेस्ट में आए। अगर आप देखें तो ओनली पार्ट बी सी पर जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की वो लूज होगी अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अगर आप देखें तो बी से सी तक जाने में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा और सी से बी तक आने में वापस 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मीनिंग ये है एक कोलिजन में टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा ये 4 मीटर कवर करेगा। राइट, ओके, तो वी कैन लेट block comes to rest, block comes to rest after an collision, after an collision. Okay, so on applying the total initial energy is lost against the friction, that is initial potential energy or initial gravitational potential energy will be equal to the work done against friction. Work done against friction. Let mass of this block is m. Then we can write initial potential energy will be equal to mgh, or that will be equal to work done against friction. Work done will be equal to mu times mg multiply by distance in one collision, that is 2 meter this and 2 meter this, that is 4, and multiply by number of collision, that is equal to n. From here we can calculate the value of n. On cancel out m from m, we can write v is given here as 10 and h is given here as 4. That will be equal to u will be equal to 0.1 multiply by 10 multiply by 4 multiply by 10. On simplifying, we can write 4n will be 40, or we can write n will be equal to 10. So from here we have calculated number of collision when block come to rest. इसका मतलब ये है कि ब्लॉक जो है रेस्ट में आने से पहले इस बॉल को 10 बार टकराएगा। ओके, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जिस टाइम ये 10वां कोलिजन करेगा उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक when
it strikes 10 times. The distance covered, let the velocity of block after 10th collision is V. Then on applying conservation of energy, we can write mgh will be equal to mu times mg multiplied by 2, because before first collision the block only traveled 2 meters on the rough surface, plus mu times mg multiplied by number of collision remaining 9, and the total distance covered on the rough surface will be 4, that is 2 meter this and 2 meter this. This can be written on applying energy conservation that the velocity of block after 10th collision is V. On applying conservation of energy, we can write mgh minus mu mg into 2 plus mu mg into 9. This is the total energy lost against friction will be equal to half m square. Okay. We will simplify it to calculate the value of P. We can write GH minus 38 mu G will be equal to half G square. On putting the value of G and H, G is 10 and H is given as 4 minus 38 multiplied by 0.1 multiplied by 10 will be equal to half G square, or we can say that half G square will be equal to half G square will be equal to 2, or we can say that G will be equal to 2 meters. इसका मतलब यह है कि ब्लॉक जब 10वां कोलिजन करेगा और रिबाउंड होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड. Now we have to calculate the total distance on the path. The total distance covered will be equal to, before first collision, the total distance covered by the block in horizontal track will be equal to 1 meter from A to B and 2 meter from B to C, that is 10 meter. Again in 9 collision, the total distance covered will be equal to 3 meter this and 3 meter this, that is 6 meter. That becomes 9 into 6, 54 meter. And we want to calculate the distance covered after 10th collision. Okay. So the distance covered by the block after 10th collision, let it is equal to x, then we can write mu times mgx
will be equal to half half mv square. From here we can cancel out the m to m. On putting the value of mu, that is 0.1 multiplied by 10 multiplied by x, will be equal to 1 by 2 multiplied by 2 square, because velocity is 2, or that becomes 2. From here we can calculate x will be equal to 2. Okay. Now we have to calculate the total distance covered. The total distance covered by block to come rest will be equal 3 meter, that is before first collision, plus number of collision remain 9, that becomes 6 meter, plus after 10th collision, that is 2, or that comes out to be 3 meter plus 54 meter plus 2 meter, or that will be equal to 59. That is the answer. The problem is very simple. Hence, the total distance covered by the block will be equal to 59. For more such video, keep watching our channel. Thank you for watching.